Hello my dear friends, I welcome you to the multiple choice question section of the first physics 12th standard lesson, that is rotational dynamics. चौथे लेक्चर से जुड़े हुए तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, 20 इन नंबर। अधिकतर क्वेश्चन जो है आज सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर आधारित है। अधिकतर क्वेश्चन बेस बनाते हैं, सो नॉट मच ऑफ अ न्यूमेरिकल स्टफ इंक्लूडेड। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। अ बॉडी इज मूविंग with a uniform speed along a circle, UCM है. If its direction of motion is reversed but the speed is kept constant, उसके मोशन के डायरेक्शन को अगर मैंने रिवर्स कर दिया लेकिन स्पीड को कांस्टेंट रखा, the answer of the first question is B. The centripetal force will not suffer any change in the direction because it will be always directed towards the center. So the centripetal force will always be directed towards the center of the circle and will not suffer any change in the direction. Second question. The force acts on a particle performing UCM and which is directed towards the center along the radius. UCM को सस्टेन करने के लिए जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट होता है, that is referred to as the centripetal force. दूसरा सवाल, उसका जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन। तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन, the centripetal force in magnitude and direction is given by dash. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कैसे दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन नहीं, ऑब्वियसली माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर नॉट सही है। माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर नॉट भी सही है। द आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। डी, बोथ बी एंड सी, बिकॉज v इज इक्वल टू आर ओमेगा इस्तेमाल करो तो इंटर कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, क्या आंसर है? फोर्थ क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन? इट इज टूवर्ड्स द सेंटर। ये रेडियस वेक्टर है आर बार और ये जो है टूवर्ड्स द सेंटर, ये है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू आर बार। आंसर इज ए, अपोजिट टू आर बार। द आंसर इज ए, अपोजिट टू आर बार। पांचवा सवाल, इफ अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग and held in a circle, then centripetal force will be provided by. स्टोन लिया, थ्रेड को टाई किया और ऐसे घुमाया, so the tension in the string supplies the necessary centripetal force. Tension in the string, TE लिखूंगा मैं, which is mv square upon r. Tension provides the necessary centripetal force. ऑप्शन कौन सा है वो भी देखते हैं। Tension in the string provides the necessary centripetal force. The answer is A, first option. The answer is A, first option. छठा सवाल, if the earth revolves around the sun in circular orbit, assume किया उसको circular है, elliptical नहीं है, the necessary centripetal force will be provided by. Who provides the necessary centripetal force for the earth to go round? It is the gravitational force between the earth and the sun. The answer is C, gravitational force of attraction between the sun and the earth. The answer is C, third option. Question number 7. Centripetal force is a real force. Real force है, centrifugal pseudo है. Why centripetal force is a real force? Because its origin can be explained on the basis of the four fundamental forces. The answer is B, because its origin can be explained. It's B, because its origin can be explained. Question number 9. Centrifugal force is a pseudo force. नहीं, कुछ तो भी रह गया क्या बीच में? 8th question रह गया। Okay. A force which is equal and opposite to the centripetal force
in UCM is called as dash. Because UCM is a non-inertial frame of reference, एक स्यूडो फोर्स उसके साथ जोड़ना जरूरी है ताकि न्यूटोनियन लॉज ऑफ मोशन और मैकेनिक्स एप्लीकेबल हो. वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है. इट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आउटवर्ड. द आंसर इज ए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. द आंसर ऑफ द 8th क्वेश्चन इज ए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नवा सवाल. Centrifugal force is a pseudo force because it arises because of the non-inertial frame of reference. The answer is A. It is not provided by any real force, but it arises due to non-inertial or accelerated frame of reference. नवा सवाल जो है उसका जवाब है A, फर्स्ट ऑप्शन. 9th क्वेश्चन का आंसर है A, फर्स्ट ऑप्शन. Now 10th question. A satellite of the earth is revolving around the earth with a uniform speed v. गोल घूम रहा है, UCM. Okay. If the gravitational force disappears, the satellite will. पत्थर को गोल घुमाते वक्त थ्रेड को बांधने के बाद उसको जब छोड़ दिया जाता है तो वो tangentially fly off होता है. Similarly, the satellite will fly off tangentially at the point where the gravity is reduced down to 0. Therefore 10th का आंसर है move with a velocity v tangential to the original orbit. The correct option is B, second option. The correct answer is B, second option. सवाल नंबर 11, 11th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. Centrifuges are used to separate the particles of dash. सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है. ब्लड को भी उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया जाता है. हेवी और लाइटर पार्टिकल्स अलग अलग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर. हेवी पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द सेम रोटेशन. तो उस बिना पे लाइटर और हेवियर पार्टिकल्स एक सॉल्यूशन के सेपरेट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन, और जिसको सेंट्रीफ्यूग्स कहा जाता है. देयरफॉर द आंसर, centrifuges are used to separate the particles of light and heavy masses. The answer of the 11th question is B, second option. Question number 12. Select the wrong statement. गलत statement कौन सी है देखी जाए. Number 1. Centrifugal forces have same magnitude as centripetal force. Yes, mr omega square. सही है, तो सही नहीं चाहिए हमको. Centrifugal force is along the radius away from the center. It is away from the center. Centrifugal force exists in inertial frame of reference is wrong. It exists in a non-inertial frame of reference. Therefore 12th का आंसर है C, third option. 12th का आंसर है C, third option. Question number 13 और आखिरी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का. Centrifugal force is called pseudo force as its origin cannot be explained. ये भी सही है. 13वां सवाल. A driver of a car traveling with velocity v suddenly sees a broad well in front of him at a distance a. He should dash. The answer is he should apply brakes. Answer is A, because उस स्पीड में अगर वो घूमने जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसको टर्न करने की कोशिश करता है तो मुश्किल हो जाएगा. द आंसर इज ए, अप्लाई ब्रेक्स. सवाल नंबर 14, 14th क्वेश्चन. A person on a rotating table if remains at rest, अगर वो वहां पे बैठा हुआ है और वो टेबल गोल घूम रहा है तो वो बंदा, क्योंकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो यूसीएम में है, ही विल एक्सपीरियंस, जैसे मेरी गो राउंड में वी विल एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वैसे वो बंदा विल एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. द आंसर इज ही experiences A, centrifugal force. Question number 15. Although the centrifugal force is equal and opposite to centripetal force, it is not the reaction of centripetal force because dash.
सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी कैंसिल नहीं होते, याद रखो. व्हाई? बिकॉज दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी but due to two different frame of references. Centripetal is in the inertial part and centrifugal is in the non-inertial part. The answer of the 15th question is A, first option. Question number 16. A body of mass m is tied to free end of a string and held in a circle about the other end. If the string suddenly breaks, then A, centripetal force vanishes. बिल्कुल. The body will move along the tangent to the circle. Yes. The body will move towards or away from the center. नहीं, it will move along the tangent and centripetal force चला जाएगा. The answer is D. Both A and B are correct. It is D. Both A and B are correct. Question number 17. If the centripetal force acting on a body performing UCM, centripetal force, is slowly decreased, then what happens? Then the body will move. The answer is, उदाहरण से समझेंगे. सेंट्रीपेटल फोर्स कम कैसे किया? mr ओमेगा स्क्वायर. सपोज तो मैंने r कम कर दिया, थ्रेड लिया, उसको घुमाया और फिर मैंने फिंगर ऐसे रखा ताकि वो थ्रेड मेरे हाथ के ऊपर लपटा जाए, जैसे what you can say, kite की चक्री होती है वैसे. तो what is going to happen? The object spirals down. Object spirals down towards the center. The answer is, then the body will move towards center along a spiral path. The answer is B, second option. The answer is B, second option. अगला सवाल. A centripetal force is a real force which provides with the real interaction force of dash. सेंट्रीपेटल फोर्स कौन से टाइप का है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, किसी भी तरह का हो सकता है. द आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. सेंट्रीपेटल फोर्स कहीं से भी ओरिजिनेट होकर आ सकता है. ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे नॉर्मल फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैसे ये सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन कराने के लिए जरूरी है. एटम के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल सप्लाई द सेंट्रीपेटल फोर्स. ग्रेविटी में या सैटेलाइट के केस में द ग्रेविटेशनल फोर्स विल सप्लाई द सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगला सवाल. A steel ball is placed on the boundary of a circular disc. सर्कुलर डिस्क ली और उसके बाउंड्री के ऊपर स्टील बॉल रख दिया. When the disc rotates, the ball will fall down. When will the ball fall down? वो बॉल और वो जो सरफेस है प्लेट का, उसमें क्या है? फ्रिक्शन है. अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है तो वो गिरेगा, नहीं तो तब तक वो उधर ही रहेगा इन स्पाइट ऑफ एक्सपीरियंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. द आंसर इज ए. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉल सरफेस एंड डिस्क will not provide necessary centripetal force, so it will experience an outward force. जब तक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर पाता है, तब तक वो बाहर नहीं जाएगा. The answer of the 19th question is A, first option. आज का आखिरी 20th question. Which of the following statements are true for a cream separator? जो आइसक्रीम्स में होता है वो. नंबर 1, the particles of cream are lighter so that they will experience less centripetal force and will follow a circular path of smaller radius. Yes, lighter है तो कम centripetal force होगा. The particles of milk are heavier so that they will experience larger force and will follow a circular path of higher radius. Obviously, mass ज़्यादा है तो ज़्यादा radius. Cream particles will collect near the axis of rotation and the heavier milk particle will collect outside. सभी ऑप्शन सही है. The answer is A, D, all of these. The answer is D, all of these. तो आज का जो पूरा सेक्शन था वो पूरा कंसेप्ट बेस्ड था कि सेंट्रीपेटल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग दैट. तो न्यूमेरिकल नहीं थे, जल्दी खत्म हो गया काम. आशा करते हैं कि आपको समझ में आया है. कल वापस मिलेंगे और कुछ सवालों के साथ. तब तक के लिए रुक जाते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.